Hello everyone, let's start with set number 4 of David Copperfield. We have already done 75 question in earlier 3 sets. Let's start with set number 4. Question number 1 is, according to Steerforth, why was he jealous of Ham? उसको हैम से जलन क्यों होती थी? Because Ham had a growing up with a father figure while Steerforth had not. Steerforth did not have father figure to guide him while Ham had. Next question is, who is David's bad angel? David good angel is Agnes. David bad angel is Steerforth. Now let's come to next question. Why does Mr. Peggotty decide to move his family to ऑस्ट्रेलिया? मिस्टर पिगॉटी क्यों डिसाइड करते हैं कि उसको फैमिली लेकर के, पूरी फैमिली को लेकर के ऑस्ट्रेलिया चला जाना है? सो दैट एमिली कैन स्टार्ट ओवर वेयर नोबडी नोज हर. स्टीयरफोर्थ जो है, ही हैड टेकन एमिली and he had used her and did not marry her and left her, and before he could proceed any further he dies. तो मिस्टर पेगॉटी चाहते हैं कि वो उसको एक नई कंट्री में ले जाए जहाँ पर कोई उसको जानता ना हो और जहाँ से वो अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज डेविड्स ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टीयरफोर्थ's डेड बॉडी स्पेशली स्ट्राइकिंग? बिकॉज the body was lying in the same position in which Steerforth had sleeping during their years of boarding school. बोर्डिंग स्कूल के ईयर में वो जैसा सोया रहता था वैसे स्टीयरफोर्थ यहाँ पे भी सोया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why does Mr. Dick take a job with Traddles? मिस्टर डिक जो है वो ट्रैडल्स के साथ जॉब क्यों लेते हैं? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प Miss Betsy's financial situation. So he takes the job of copying the manuscripts. David is born with what? David is born with a caul. Next question is, which of the following does David described as one of the happiest time in his life? His youth before his mother married to Mr. Murdstone. Next question is, and his time with Peggotty at Yarmouth. Next question is, why was David respected during his time at Murdstone and Grinby's? Because he never complained, क्योंकि वो कभी complain नहीं करता था. Next question is, why does David decide to run away from Murdstone and Grinby's? Because he does not want to stay without the Micawbers, and his condition was very bad too. Why does Miss Betsy rename David? मिस बेट्सी जो है डेविड को क्या रीनेम करती है, वापस उसका नाम क्या रखती है? तो वो रखती है डेविड ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज डेविड मीट यूराया हिप? व्हेन मिस बेट्सी टेक्स डेविड टू हिज न्यू बोर्डिंग स्कूल, ही मीट्स एट कैंटरबरी. He meets Uriah Heep. Next question is, what does David notice Jack Meldon carrying as he leaves for his new job? Jack Meldon is Annie's cousin. So he is carrying Annie's red ribbon. Next question is, while having tea with David, Uriah and Mr. Heep, David makes David very uncomfortable by doing what? ठीक है, जब डेविड जो है वो यूराया हिप और मिसेस हिप के साथ चाय पी रहे हैं तो और उनको ज़बरदस्ती रोका जाता है, तो वो अनकंफर्टेबल क्यों फील करते हैं? बिकॉज ये लोग कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछते रहते हैं अबाउट एग्नेस एंड मिस्टर वेकफील्ड्स फाइनेंशियल सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ब्रिंग्स डेविड एंड डोरा टुगेदर? Mr. Spanlaw, Dora's father, who is David's supervisor. तो वो he invites him home, so they came together. Steerforth views Tommy Treadle with what? Steerforth जो है टॉमी ट्रेडल को डिस्गस्ट के साथ देखता है because he is not financially sound. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन हैम फाइंड्स आउट, जब हैम को पता चलता है दैट इमली हैज़ रन अवे विथ स्टीयरफोर्थ, की इमली जो है स्टीयरफोर्थ के साथ भाग गई है, ही रिएक्ट्स टू डेविड विथ व्हाट? वो कैसे रिएक्ट करता है? अ रीअश्योरेंस, फॉर ही डज नॉट ब्लेम डेविड फॉर इंट्रोड्यूसिंग इमली टू स्टीयरफोर्थ. वो डेविड को लगा कि उस पर ब्लेम आएगा क्योंकि उसने ही इंट्रोड्यूस करवाया था
स्टीयोफोर्थ को इस फैमिली से, बट हैम जो है डेविड को अक्यूज नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द नॉवल स्ट्राइविंग फॉर सोशल स्टेटस? डेविड्स एंड डोरा's courtship. Next number, question number 18 is David and Peggotty's find their happiness through what? David and Peggotty's find their happiness through family and spouses. Next question is not through money and financial property. It's not about simple frivolous pleasure. It's not through the social status. Next question is Dora finds happiness through what? Simple and frivolous pleasure. Uriah Heep and Micawber's find their happiness through money and financial security. Next question is female empowerment is modeled best by which women? By Peggotty and Agnes. Next question is what do Steerforth and Uriah Heep have common? Lack of father figure. दोनों के father figure नहीं है. Next question is when David says that he has a memory like of a child's, तो उसकी मेमोरी एक बच्चे की तरह है, तो व्हाट डज ही मीन? दैट ही इज मेमोरी इज वेरी डिटेल्ड. उसकी डिटेल मेमोरी, वो छोटी छोटी चीज़ों को याद रखता है. नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम अ यंग एज एमिली फियर्स व्हाट? शी फियर्स ओशंस. एमिली फियर्स ओशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ whom is David living by the end of the novel? By the end of the novel, he is living with Peggotty, Miss Betsy, Mr. Dick, Agnes, and his 3 children. So these are another 25 questions. Keep reading, keep enjoying. Thank you.